بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected parents and my cute students. How are you all? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेरेंट्स का और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सही है बच्चों, आप तो अपना लेसन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना होमवर्क टास्क भी कंप्लीट कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप में आपके कुछ बच्चों के जो हैं वो फीडबैक भी आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ बाकी पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि वो भी अपने बच्चों के होमवर्क्स और उनके लेसन में उनकी मदद करें और हमें अपना फीडबैक दें ताकि हमें पता लगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा ले भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। और आपको उनसे फ़ायदा लेना चाहिए क्योंकि ये हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस जो टफ़ सिचुएशंस है इसमें हम आ रहे हैं, आपके लिए क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, तो हमें खुशी होगी अगर आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप अपना फीडबैक हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। Okay students, as you know this is your English book, so open your page number 7. Okay my dear students, जैसे कि कल हमने किया था, we will do the matching to the match the words to the correct picture, ठीक है। So today we also, this is our page number 7. Okay, first open your page number 7 and this is also about vowel O. This is about vowel O. जैसे कि हमने शुरू में A, E, I vowels हमने पढ़ लिए. Now we come to the vowel O and वो words हम use कर रहे हैं जिसमें vowel O आता है. Okay, so look at the picture here. This is so colorful page, huh? Very colorful page. And we will read and match the words to the correct picture. Okay? First we are going to read them, understand them, and then we have to match the words with the correct picture. Okay? So look at the first picture. Can you tell me what is this? What is this? This is a animal. ये animal है and ये this is a forest animal. ये जंगल में होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ox. What is this? Ox. O-X. Ox. O-X. Ox. O-X, ox. So we have to match the word with the ox picture. Okay. Now look at the second picture. What is this? Who will tell me what is this? Raise your hands. Very good. Doll. Doll. We will find here the doll word. Where is the doll word? This is the doll word. D-O-double-L, doll. D-O-double-L, doll. D-O-double-L, doll. Okay? Pot. P-O-T, pot. P-O-T, pot. P-O-T, pot. Pot क्या होता है? Show me the picture. Where is pot? Pot, pot, pot. This is pot. Yes, this is pot. This is pot. Now, then we have to match them. We have to match the word pot with the picture of pot. Okay? The next one is frog. F-R-O-G, frog.
F-R-O-G, frog. F-R-O-G, frog. Okay, this is the word frog. And the picture of frog is here. This is frog. So we have to match it with the word. Okay, the next one is clock. Clock. C-L-O-C-K, clock. C-L-O-C-K, clock. C-L-O-C-K, clock. Okay, and where is the picture of clock? Is this a clock? No. Is this a clock? No. Yes, this is a clock. Okay, clock. And the word clock is here. So we have to match with the picture. Okay. The next word is yo-yo. Y-O-Y-O, yo-yo. Y-O-Y-O, yo-yo. What is yo-yo? जिस पे आप खेलते हैं, ये एक टॉय है yo-yo. Okay? Yo-yo. This is the picture of yo-yo. So we have to trace it, match it with the word yo-yo. Okay? Now, ox, doll, pot, frog, yo-yo, clock. Now we have to match them with the pictures and the words. Okay? Come on, follow me. Yes, this is ox, picture, and this is the word ox. So we have to match it. Okay? Now the second one, doll. This is the doll's picture. And where is the word doll? Here it is. So come on, match it. Yes, very good. Now the third one, frog. This is the word frog. F-R-O-G, frog. And this is the picture of frog. So come on, match it. Frog. Very good. Okay. The next one is clock. 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 C-L-O-C-K, clock. And the picture is here. Nice. Look at here. Yo-yo. Yo-yo. Y-O-Y-O, yo-yo. Yo-yo. So come on, match the word yo-yo with the picture yo-yo. Excellent. Did we finish it? कुछ रहता तो नहीं है? Come on, मुझे बताओ कौन सा picture रहता है? Yes, pot. We didn't do this. Okay, this is a pot. And where is the word pot? This is the word pot. So come on, match it. Yes, now this is finished. Okay, we match all of them, and you have to do it with the help of pencil and scale. Scale के बगैर नहीं करना क्योंकि फिर untidy लगेगा. It's look untidy. Okay, हमने नीट काम करना है ताकि हमारी बुक्स गंदी ना हो और वो नीट रहे. ठीक है? Look at the word doll. D-O-L-L, doll. Pot. P-O-T, pot. Frog. F-R-O-G, frog. Ox. O-X, ox. Clock. C-L-O-C-K, clock. Yo-yo. Y-O-Y-O, yo-yo. आपने देखा कि इन सब वर्ड्स में हमारे पास वोवल ओ यूज हुआ है.
ठीक है, दिस इज द पेज ऑफ वोवल ओ। इसमें हम सब ने सब लेटर्स में ओ का यूज हुआ है, सही है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी मैच, क्योंकि हम पिछले 2 पेजेस में भी मैचिंग कर चुके हैं, ठीक है? यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन and then match. Okay, you have to learn the spellings also. Okay, dear students and my intelligent students. Okay, now here we come to the new words. We have some new words here. Cot, cot, C-O-T, cot, C-O-T, cot, C-O-T, cot. Cot क्या होता है? Anyone tell me? Cot वो होता है जिसमें हम बच्चों को लिटाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कॉट हम इस टाइप का उनके लिए बनाते हैं ताकि बच्चे हम इसमें डालें तो वो गिर ना सकें। लोग, हम बड़ों के बेड्स जो होते हैं उनमें तो ये चीज़ें नहीं होती ना, ये रेलिंग सी, ये सिर्फ बच्चों की बेड्स पे होती हैं जो बेबीज़ होते हैं, ताकि ये उनकी सेफ्टी बने और वो बेड से नीचे ना गिर सके, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कॉट, C-O-T, कॉट, C-O-T, कॉट। ओके, नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ शर्ट, बट ये शर्ट के ऊपर क्या है? व्हाट आर दीज? स्पॉट्स, S-P-O-T-S, स्पॉट्स, S-P-O-T-S, spots, S-P-O-T-S, spots. Spots क्या होते हैं? दाग। जब हम शर्ट पहनते हैं और वो उस पर कुछ गिर जाता है, केचप गिर जाता है, चाय गिर जाती है, तो उससे फिर हम कहते हैं ये स्पॉट्स लग गए हैं इन पे, मम्मा प्लीज़ आप इनको धो लें, इस पे स्पॉट्स लग गए हैं, ठीक है? स्पॉट्स जो होते हैं वो दाग होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। ये क्या नजर आ रहा है? दिस इज रॉक, R-O-C-K, रॉक, R-O-C-K, रॉक। जो पहाड़ का जो छोटा सा हिस्सा होता है, जो छोटा सा पत्थर होता है, उसे हम रॉक कहते हैं, सही है? जो समंदर के साइड्स पे भी होता है उसे भी हम रॉक कह सकते हैं, ठीक है? जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, R-O-C-K, rock. Okay, now come to the next picture. What is this? I think it's look like a shop. Yes, it is a shop. S-H-O-P, shop. S-H-O-P, shop. S-H-O-P, shop. Yes, this is a शॉप, दुकान, जहाँ से आप चीज़ें लेते हैं अपने लिए आप बुक्स भी ले सकते हैं, अपने लिए चिप्स और कैंडीज भी ले सकते हैं, लॉलीज भी ले सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है? हर किस्म की चीज़ की शॉप होती है, ग्रॉसरी की शॉप भी होती है और बुक शॉप भी होती है, ठीक है? नाउ वी फिनिश दिस फर्स्ट पेज। आपको इसमें जिस चीज़ की भी समझ ना आए, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना दे सकते हैं फीडबैक कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई और आपको ये कैसे करना है, उस पर भी अगर आपको समझ नहीं आई। आई होप आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको समझ आ गई होगी, मुझे पता है। इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद यू, सो यू हैव टू डिस्कस इट विद मी ऑन व्हाट्सएप, ओके? This is your lesson and this is your page number 7 और मुझे पता है कि आप घर में इसे रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? अपनी मम्मा के साथ बैठ के, अपने पापा के साथ बैठ के इसको रिवाइज करेंगे, इसको मैचिंग करेंगे, ठीक है? नाउ वी कम टू योर होमवर्क टास्क। Okay students, now come to your homework task. Take out your English page or English notebook, whatever you have, 4 lines, okay? Then draw margin line here first, here and here margin lines first, then write English and homework and date.
ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछे कौन सी डेट है उस दिन, आप उस दिन अपनी डेट लिखें, ठीक है। द क्वेश्चन इज राइट 21 कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो इस तरह आपने 21 कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। And in the last, draw finishing line with the help of scale, margin lines with the help of scale and finishing line with the help of scale, okay। Thank you students। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना लेसन भी प्रिपेयर करना है, अपना होमवर्क टास्क भी कंप्लीट करना है, हमें व्हाट्सअप करना है ताकि हम चेक करें कि आपने कितना काम किया है और हमें कितना फॉलो कर रहे हैं। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप हमें फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू पेरेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन, और हम खुश होंगे कि आप आगे भी हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.